First of all, thanks to all my 10 subscribers. Yes, I never asked any of my friends or family members to subscribe, and many of my friends doesn't even know that I started a YouTube channel. But it makes me really happy to see that we have reached double digit today. We have reached 10 subscribers, and please do subscribe and share it with your friends. In case if you like this video, please show some love. So without wasting any more time, let's get into this question. So this is basically a question from Ind AS 108 operating segments. So it is one of the rare questions जहाँ पे क्वेश्चन में पूरा आंसर रहता. तो क्वेश्चन इज लाइक a raw data. You have to present it properly. That is what is ICA is expecting from you. So ये ना 2 to 3 times you should practice before the exam. Otherwise definitely you will make a mistake. लगता है easy, but definitely you are going to make a mistake if you don't practice. So one of the attempts where ICA asked this question for 12 marks. बहुत रेयर था, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. अभी भी लाइक लास्ट 2-3 अटैम्प्ट से 108 में से क्वेश्चन नहीं आया. सो दैट मेक्स दिस स्टैंडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अगर आ गया ना तो 8 मार्क्स से कम तो नहीं आता. मार्क में वर्ड्स मार्केट अगर ये क्वेश्चन आ गया तो 8 मार्क्स से कम नहीं आता. सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में आता है. सो या लेट्स गो. सो यहाँ पे ना 2 सेगमेंट्स है, कोटिंग एंड अदर्स. आई एम नॉट गोइंग इन डीप इनटू द क्वेश्चन. ऊपर से बता देता कि यहाँ पे 2 सेगमेंट्स हैं. और इफ़ यू हैव सीन माय कॉन्सेप्ट वीडियो, वहाँ पे मैंने बताया कि व्हेन देयर आर 2 or 3 segments and you want to combine all the segments and show it as one operating segment. So certain criteria are there. If those criteria are met, then you can show all the operating segments as single operating segment. Perfect. So यहाँ पे भी ना 2 operating business segments हैं, that is quoting and others. ओके, सो उसका रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया है कोटिंग एंड अदर्स करके, एंड देन देयर इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑल्सो. परफेक्ट नो. तो क्या एक्सपेक्ट कर रहा बेस्ड ऑन द अबव कमेंट ऑफ disclose the information, how it would disclose about the reportable segment, revenue, profit and loss, and assets and liabilities. So purely how it is going to disclose its information. So as I said, it's purely based on the presentation. How are you going to present those 2 segments का information? Perfect no. So let's get started. Initially ना थोड़ा लिखना पड़ता है कि there are 2 business segments. Quoting comprises of so and so, ये एक point, and then others consists of so and so करके you have to write it down in your answer when you are writing. So if you see, this is the first point. So quoting के लिए quoting consists of this and others consists of this करके 2 points लिख देना, and then you will get into actual answer. So as they ask revenue के बारे में, profit and loss, and other assets and liabilities के बारे में, so you will put the same thing, revenues and other information. Okay, so first talking about revenues. ठीक है, revenue is different. Revenue talks about what are the sales that you have done during the period. Profit and loss talks about what are the profits or losses that you have earned during the period. So don't get confused between these 2 in the exam hall. First point where students are going to make mistake is this point only. I'll tell you at the end कि where all you guys can make a mistake. Yeah, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है वहाँ पे. तो in the question if you say external revenue is 2 lakhs, others is 70, write it down same पे. टोटल आ गया 2,70,000. बोलता है कि दिस इज इंक्लूसिव ऑफ GST, मतलब उसको GST को हटा दो. हटा दिए तो नेट रेवेन्यू आ जाता है. ओके, टिल हियर वी आर डन नाउ. ठीक है, एंड देन अदर ऑपरेटिंग इनकम इज ऑल्सो गिवन. अदर ऑपरेटिंग इनकम यू विल एड इट टू द कोर ऑपरेटिंग इनकम. ठीक है, जो यहाँ पे बैलेंस आ गया ना उसको दिस इन्फॉर्मेशन यू विल एड, देन यू विल गेट टोटल रेवेन्यू. लेट्स सी द सेम थिंग इन द आंसर. ओके, सो एक्सटर्नल रेवेन्यू पहले उसमें से GST को हटा दिया 5,000 and 3,000, फिर आ गया तेरे को नेट. दिस इज द नेट बैलेंस. उसको तू अदर ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दिया. Right, this is actually given in your question only. The only thing is you're presenting it properly. All this information is given here. All this is given in these 3 boxes. Now you're presenting it properly and telling it total revenue इतना आ गया. So if you see the question, first one, this part, revenue part is done. Now let's go and see profit and loss. ठीक है, स्टार्ट हो जाता है रिजल्ट्स. हाउ रिजल्ट्स, अभी रिजल्ट्स कैसा आ गया यहाँ पे क्वेश्चन में देखो तो नेक्स्ट इज रिजल्ट्स. सो पुट द हेडिंग रिजल्ट्स. तो ही गेव अस कोटिंग का 10,000 एंड देन अदर्स का 4,000. प्लॉट द सेम नंबर्स इन कोटिंग एंड अदर्स का कॉलम. टोटल 14,000 आ गया. राइट, नाउ यू कम डाउन. यहाँ पे अनएलोकेटेड इनकम दिया है. ठीक है, डोंट गो एंड पुट दिस इन रेवेन्यू इन द एग्जाम. पॉइंट नंबर 2, अनएलोकेटेड इनकम कम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस, नॉट इन रेवेन्यू. क्लियर हो. सो अनएलोकेटेड इनकम रिजल्ट्स हो गया. रिजल्ट्स पे बाइफिकेशन दिया कि दिस 10,000 बिलोंग्स टू कोटिंग, दिस 14,000 बिलोंग्स टू अदर्स. ठीक है,
Now this unallocated income, there is no bifurcation between quoting and others. So you'll directly put this 3000, yeah, what is, yeah, they directly put this 3000 in the total column. I'll show you. Segment results 10,000 हो गया, 4,000, total 14, perfect. उसमें unallocated income ना, you are not showing anything here because that breakup is not given in the question. Directly you will show in the total column. Total 17 आ गया, तो this 17 is nothing but profits from profits before interest, exceptional items and taxation. ठीक है, ऐसा लिखना पड़ता है एग्जाम पे, right? So now profits before interest, taxation and exceptional items, no, you see if any information is given regarding interest. यहाँ पे देखो तो interest and bank charges दिया, so you will remove this amount from that profit, right? So remove it. And then is there any exceptional item? नहीं दिया, but still ICI has presented this, no, in the question. सी फर्स्ट इंटरेस्ट निकाल दिया, देन प्रॉफिट्स बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स आ गया. अभी देखना एक्सेप्शनल आइटम्स दिया, क्वेश्चन में तो एक्सेप्शनल आइटम्स नहीं दिया, बट स्टिल ICI हैज़ गिवन दैट. सो फॉर प्रेजेंटेशन पर्पज दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट वे यू शुड रिमेंबर. तेरे को 8 मार्क्स होना है तो याद रख के लिख के आना पड़ता तेरे को, राइट? सो एक्सेप्शनल आइटम्स हो गया, सो प्रॉफिट्स बिफोर टैक्सेशन आ गया. नाउ सी वेदर एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टैक्सेशन इज गिवन. लेट्स गो. Yes, information regarding taxation is given and breakup is given for current tax and deferred tax. ठीक है, यहाँ पे भी quoting and others का information नहीं दिया, only breakup is given regarding current and deferred tax. Everything is in total. If you see segment results का breakup दिया क्वेश्चन में, उसके बाद everything is in total only because breakup नहीं है उसका. Perfect. So incomes, income taxes, current tax and deferred tax करके अच्छे से breakup देके you should write this too. Okay. So the total profit after taxation comes for 13,000. So till here profits का मतलब results का भी हो गया, profit and loss का ख़त्म हो गया. Now we will enter into assets. Now if you see, no, यहाँ पे ना fourth point talks about unallocated investments. Investments is an asset. Now you go to this information after results, no, assets is only there. So assets का breakup दिया 50 and 30. So plot this. Quoting में 50, others में 30,000. You will plot it. Total आ गया 80. Now to this 80,000, no, you will go and add this unallocated investments. बोल रहा unallocated मतलब there is no breakup. Direct total में you will add this 1 lakh. And then comes other assets also. Perfect, no? So assets पूरा हो गया. Assets first 50-30, this 50 and this 30, and then this fourth point, unallocated investments. Now let's go and see the assets part. ओके, सेगमेंट्स का ब्रेकअप दिया क्वेश्चन में, एंड देन एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स में अनएलोकेटेड इन्वेस्टमेंट्स इज 10,000, अनएलोकेटेड एसेट्स इज 10,000. यू विल प्लॉट ऑल दोज इन्फॉर्मेशन एंड दिस टू विल कम इन टोटल बिकॉज देयर इज नो ब्रेकअप. परफेक्ट. टोटल आ गया 1 लाख. इजी, नो? येस, दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी. एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन ओनली, यू हैव टू प्रेजेंट इट प्रॉपरली. परफेक्ट, नो? नाउ एसेट्स का पार्ट हो गया. नाउ यहाँ पे इफ़ यू सी द फिफ्थ पॉइंट ऑल्सो, नो, इट इज़ टॉकिंग अबाउट लायबिलिटीज. ठीक है. Now even here the actual question, if you see also, no, liabilities है assets के बाद. So you will plot 30 and 10, quoting others में 30,000 and 10,000 आ गया. And then other information में they have given you unallocated liabilities, reserves and surplus, share capital. So इसका format देखो, पहला 30 and 10 लिख दिए liabilities बोल के, and then unallocated liabilities बोल के you will plot this to, what is that, to 20,000 amount. And then comes equity, not reserves and first comes equity and then comes reserves and surplus. Remember that. Once I'll show you that. Okay. So liabilities में segment liabilities 30 and 10. This they have given us in the question, so that you have plotted here. And unallocated liabilities, no, this 20,000 will directly go and sit in total column. Share capital and reserves and surplus. This is also given in the question, but order देखो तुम. Segment liabilities first and then unallocated liabilities, फिर share capital and then reserves and surplus. Perfect. Till here our liabilities is also done. Liabilities and shareholders funds is also done. Okay, now we will go back to the question. ठीक है, यहाँ पे ना पूरा information we have utilized from this to this. All the information now we have utilized, and यहाँ पे fifth point is also done. Now what is additional information? Sixth same. It is talking about depreciation. 7 is talking about कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो आंसर में ना अदर्स बोल के एक हेडिंग डाल देना. एसेट्स होने के बाद सी अदर्स बोल के एक हेडिंग डाल देना, उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड देन डिप्रिसिएशन का अमाउंट्स प्लॉट कर देना. दिस इज व्हाट दे गेव अस. बट यहाँ पे रिमेंबर दिस फिगर्स आर इन नेगेटिव.
ठीक है. These figures are negative and you're not adding or subtracting, you're just showing them. You're not adding to assets or you're not removing from assets. Perfect, no? That is another area where you can do mistake. ठीक है, that is done. So we are done with 6th and 7th point also. Now 8th point is left. बोलता है कि revenue from outside India is 620 and then segment assets from outside India is, मतलब he is giving information which is outside India. ठीक है. Now what is the first one? He gave revenue. Total revenue अपने को कितना आया? 317. This is what we got after doing the answer, no? After calculating revenue, first point, total revenue is coming to 317, and in the question is saying कि revenue outside India is what is that, 62,000. Yeah, outside India is 62,000. तो बैलेंस बन जाता इंडिया का. आई विल शो यू. ऐसा एक जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन बोल के हेडिंग लगाना पड़ता. एंड देन रेवेन्यू के बारे में, बिकॉज ही गेव दैट इन्फॉर्मेशन, नो, दिस 317 वी एक्चुअली गॉट. See, this we got. Okay, I'll use another one. See, this 317 we got that. Plot it. This 62,000 he gave in the question. Let's see, this 62,000. Okay, अभी बैलेंसिंग फिगर बन गया. दिस वन, दिस इज द टोटल फिगर. आउटसाइड इंडिया में इतना हुआ तो इंडिया में कितना, दैट विल बी द बैलेंसिंग. 255 इज द बैलेंसिंग फिगर. यू शुड रिमेंबर दिस इन द एग्जाम ऑल. परफेक्ट. नाउ सेगमेंट एसेट्स के बारे में भी दिया. नाउ इफ़ यू सी सेगमेंट एसेट्स का आउटसाइड इंडिया का पोर्शन कितना है, 10,000. ओके, अब व्हेन वी कैलकुलेटेड वी गॉट 1 lakh. दिस इज व्हाट वी गॉट. ओके, नाउ 1 lakh इज द टोटल. आउटसाइड इंडिया में 10,000 है तो दिस विल बी द बैलेंसिंग फिगर. परफेक्ट, राइट. एंड देन कैपिटल एक्सपेंडिचर जो यहाँ पे है, यू शुड प्लॉट इट अगेन. ओके, सो दैट इज इट in this question. We will do once more. Okay, first external revenue आ जाता. external revenue is very easy. first GST को adjustment देना and then other operating income को add कर देना. You will get total revenue. Perfect. And then comes results. Results का you will give information, unallocated income add कर देना उसको, and then whatever balance comes is profit before interest, exceptional items, remember that, and then taxation. You will remove interest, you will give adjustment to exceptional items saying it is null, एंड देन टैक्स को भी हटा देते. देन यू विल गेट प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्सेशन. P&L का भी खत्म. रेवेन्यू हो गया, P&L हो गया. एसेट्स, एसेट्स इज वेरी इजी. वन इज सेगमेंट एसेट्स एंड देन अनएलोकेटेड एसेट्स. हो गया, टोटल एसेट्स आ गया. ओके, अनएलोकेटेड इन्वेस्टमेंट्स भी था, सो यू विल गेट एडजस्टमेंट टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो. देन एंड देन लायबिलिटीज भी सेम. फर्स्ट सेगमेंट लायबिलिटीज एंड देन अनएलोकेटेड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड देन रिजोर्स सरप्लस. 4 balances done. Your liability is also done. This is the additional information which is given in the additional information. Just plot it, make sure that it is in minus figure, right? अभी outside India का information दिया, so you have to give a geographical information heading, and then this information is actually given in additional information, and these balances we actually got from our answers. यहाँ पे total assets देखे ना, where is that gone? Assets का देखे तो if you see the assets 1. So this is the balance, 1 lakh we got for total assets, right? 1 lakh. ये balancing figure हो गया. This is the information given in the question saying this 10,000 belongs to outside India. And same likewise, the 317 is the answer we got. पहले revenue करे तो, and then outside India balance 62,000, so 255 will be the balancing figure. Perfect, no? You should not make any mistake. पूरा marks लेके आ जाना चाहिए. So as I said, capital expenditure is 1 point where you can do mistake. It will come again in geographical information, and then ये दो informations will be in negative balance, and then exceptional items का एक adjustment देना पड़ता, even though that information is not given in the question. For presentation purpose that will come in your answer saying it is nil. Perfect. So another third point. And then ये जो unallocated income है, don't get confused in the exam hall. Don't give its adjustment here in the revenue. Revenue is separate, unallocated income is separate. Unallocated income comes in P&L. Revenue is actual sales amount. Clear, no? I hope this video was helpful. In case if this video was helpful, please do like and subscribe, guys. Okay, last notes. See this first point, no? When you're clubbing 2 or 3 segments, that should be as per Ind AS. Write the same thing. If you have not watched my concept video, please do go and watch it. It will be there in the playlist. Very important, you will understand that. See, as I said, you know, उसका nature same होना चाहिए. 2 segments का nature same होना चाहिए. And then organization structure should be same.
economic environment should be same, internal reporting segment. No, all these are similar. No, that's why they are clubbing those two segments, quoting and others. Two segments are clubbing in this answer. Perfect. This no one can remember. यहाँ पे बोलता है कि unallocated assets include. How do we know? In the question itself they have not given, so उतना पट्टी मार के नहीं जा सकते एग्जाम हॉल को. So it will be very difficult to remember this point during the exam. So I would say skip that one. And then corresponding figures. See, any time when you prepare financial statements, no, you will give information about the previous year figures also. So since in this question they have not given, we have not provided. Okay. Ideally, in the practical scenario, the corresponding figures would need to be given. ठीक है, वो एक point लिख देना. So 1 and 2 points I would suggest you to remember. One is as per Ind AS 108 and the other one is corresponding figures के बारे में. Clear? I hope this video was helpful. Please do like and subscribe, and thank you all so much guys.